Hello and assalamu alaikum everyone. How is it going? Welcome back to the channel. My name is असद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ज़ेडी क्रिएट्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 5 हैक्स शेयर करूंगा चैट जीपीटी से रिलेटेड। इन 5 हैक्स को यूज़ करके आप चैट जीपीटी से बहुत सारा काम इन चंद सेकंड में कर सकते हैं एंड यू विल फील a lot productive with these 5 hacks. So without wasting any further time, let's straightly get into it and talk about these 5 hacks. सो हैक नंबर फर्स्ट इज रिकमेंडेशन। आप चैट जीपीटी को यूज़ करके यू कैन रिकमेंड योर सेल्फ बुक्स, मूवीज़ और पॉडकास्ट और एनीथिंग। आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो और वो आपको बुक्स, मूवीज़ और बहुत सारी चीज़ें रिकमेंड कर सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ। सो आप देखिए इधर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रिकमेंड मी 5 बुक्स on self-help and enter. Book number first on self-help is The Power Up Now, The 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey, Awaken the Giant Within by Tony Robbins, The Alchemist by Paulo Coelho, and Man's Search for Meaning. So these are the 5 books that is recommended to me by ChatGPT on self-help. So इसी तरीके से आप 5 अपने लिए books भी recommend कर सकते हो एक certain topics के ऊपर. Now let's check and recommend some movies. For example, 5 best movies of 2022. The Power of the Dog, Dune. इसी तरीके से आप अपने लिए मूवीज़ और बुक्स को भी रिकमेंड कर सकते हो। सो सी आप चैट जीपीटी को यूज़ करके अपने लिए बुक्स, मूवीज़, पॉडकास्ट, इंटरव्यू जो भी चाहते हो आप रिकमेंड कर सकते हैं एंड चैट जीपीटी विल गिव यू द बेस्ट ऑप्शन टू सी दोज थिंग्स। हैक नंबर सेकंड विद चैट जीपीटी इज़ दैट कि आप चैट जीपीटी को यूज़ करके एक लॉन्ग वीडियो को समराइज भी कर सकते हो। किस तरह करना है, आपने लिखना है समराइज दिस वीडियो, फिर पेस्ट करना है उस लिंक को एंड देन द टाइटल ऑफ दैट वीडियो। सो मैं यूट्यूब से एक वीडियो लेता हूँ फॉर एग्जांपल ये वाला, ठीक है। यहाँ पर आकर लिंक को कॉपी करता हूँ और यहाँ चैट जीपीटी में आकर लिखना है समराइज दिस वीडियो और फिर उस लिंक को पेस्ट करना है, ठीक है। फिर जाकर टाइटल कॉपी करना है दिस वन, ठीक है। यहाँ आकर टाइटल पेस्ट करना है और एंटर। सी वो समराइजेशन शुरू हो गई। तो आप इसी तरीके से एक बहुत लॉन्ग वीडियो, एक बहुत जो कि 1-2 घंटे की है, वो आप समराइज़ कर सकते हैं इन जस्ट अ फ्यू लाइंस। तो इसी तरीके से आप चैट जीपीटी को यूज़ करके एक बहुत लॉन्ग वीडियो को समराइज़ भी कर सकते हो। हैक नंबर थर्ड विद चैट जीपीटी इज़ दैट कि आप चैट जीपीटी को यूज़ करके अपने आप को एक स्किल भी पढ़ा सकते हो। सो यू कैन टेल टू द चैट जीपीटी टू टीच मी अ सर्टेन स्किल and it will start teaching you that skill in just a few seconds. So for example, let's say मैंने यहाँ पर ये लिखा how to remove green screen in Adobe Premiere Pro and press enter और देखिए to remove the green screen in Adobe Premiere Pro follow these steps. तो आपको स्टेप बाय स्टेप वो एक्सप्लेन किया जा रहा है कि आपने किस तरह Adobe Premiere Pro में वो ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना है। Import the footage with the green screen into your project and place it on the timeline. One by one वो सारी चीज़ें आपके सामने आ गई and you can learn these things. For example, another one, एक और चीज़, how can I beat my laziness? This is number first, set clear goals, break tasks into smaller manageable chunks, create a routine, remove distractions, use positive self-talk, practice mindfulness, right, and get an accountability partner. तो इसी तरीके से चैट जीपीटी आपको एक स्किल भी पढ़ा सकता है, राइट। सो यू कैन यूज चैट जीपीटी टू टीच यू अ सर्टेन स्किल एज वेल और अ लैंग्वेज एज वेल।
हैक नंबर 4 विद चैट जीपीटी इज़ दैट कि आप चैट जीपीटी को यूज़ करके अपने लिए एक इमेज को भी डिस्क्राइब कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक इमेज है, ये वाला। मैंने इसकी लिंक को कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ पर चैट जीपीटी में आकर लिखना है डिस्क्राइब दिस इमेज और पेस्ट करना है और फिर एंटर। देखें, दिस इज़ द ह्यूमन एनाटॉमी, राइट। और वो पिक्चर मेरे सामने जो है ना उसकी डिस्क्रिप्शन हो रही है। तो आप चैट जीपीटी को यूज़ करके इसी तरीके से अपने लिए एक इमेज को भी डिस्क्राइब कर सकते हो, राइट। और उन सारी पिक्चर जो है ना जिसमें बहुत सारी डिटेल ऐड किया गया हो वो यहाँ पर आप समराइज़ और डिस्क्राइब भी कर सकते हो। हैक नंबर 5 विद चैट जीपीटी इज़ दैट कि आप चैट जीपीटी को यूज़ करके अपने लिए एक प्लानर भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अपने लिए एक टूर प्लानर बनाता हूँ चैट जीपीटी से। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सो मैंने यहाँ पर लिखा है आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद दिस ईद फॉर 3 days, क्रिएट अ टूर प्लान, व्हाट आर द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट, और एंटर। अब देखिए, ओके, क्या लिखा गया? Certainly, Islamabad is a beautiful city with a lot of attraction. Here is a suggested tour plan for your 3 day trip to Islamabad. Day 1, Day 2 and Day 3. Right? So, Day 1 में मैंने क्या करना है? Start your day with a visit to Faisal Mosque. Then next, head over to the Pakistan Monument Museum. After that, visit the Shakarpariya Park. Right? Day 2, spend your morning exploring the beautiful Rawal Lake. Next visit Lok Warsa Museum. Afternoon Saidpur Village, right? इसी तरीके से मेरे लिए एक बहुत ही मज़े की एक टूर प्लान इस्लामाबाद के लिए बनाया गया है विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। सो इसी तरीके से आप चैट जीपीटी को यूज़ करके अपने लिए एक बहुत ही यूज़फुल और प्रोडक्टिव चीज़ें इससे करवा सकते हो। So try to use ChatGPT and it can help you a lot with your life and the things that you do. So that's it. I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज़।